Hello friends, welcome back to our YouTube channel Endurance 2. In the previous video we have learned about the GST certificate, and in this video we will cover three topics, which is on amendment in GST certificate cancellation and revocation on cancellation. So let's get started. First topic is on section 28, amendment of GST registration. In case of any change in particulars furnished while registration, the registered person will be required to furnish details in form GST REG 14 within 15 days. मतलब हम लोग को जब GST रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब अगर उसके बाद कुछ चेंजेस हुआ है तो 15 डेज के अंदर उस चेंज का हम लोग को फॉर्म GST REG 14 वी हैव टू फाइल. And once the officer is satisfied regarding such amendment, he will grant an order in form REG 15. Okay. In case of amendment of non-core fields, अगर non-core fields अपने को amend करना है तो हम लोग just form GST REG 14 भरेंगे तो उसी में automatically वो application submit हो जाएगा. Non-core field is like other than the core fields, and core fields are like legal name of business, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड चेंज इन पार्टनर्स और डायरेक्टर्स. अगर ये तीन को छोड़ के कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो नॉन कोर फील्ड में आता है. Now the section 29 cancellation or suspension of registration. The proper section 29 का दो पार्ट है, section 29(1) and section 29(2). In section 29(1), if the proper officer may either on his own motion or an application filed by the registered person in form GST REG 16 में cancellation हो सकता है. The same can be cancelled in following cases. 5 cases में cancellation हो सकता है. Number 1, if the business is discontinued. Number 2, if the business is transferred fully for reasons like death of the proprietor. Number 3, amalgamation or demerger of the business entity. Number 4, business change in the constitution of the business. Like if there were अगर वो पहले अपना sole proprietor था और अब वो partnership firm में change हो रहा है तो जो सोल प्रोप्राइटर का GST रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल हो जाएगा. टैक्सेबल पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24. सेक्शन 24 टेल्स अबाउट द कंपल्सरी रजिस्टर्ड, जो पर्सन को कंपल्सरी GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. एंड सेक्शन 22 इज अबाउट ऑन विच द पर्सन्स आर लाइबल टू गेट द GST रजिस्ट्रेशन. इफ यू ऑल वांट टू नो द सेक्शंस 22 and 24, आई विल गिव द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So the second part is section 29(2), cancellation in case of defaults. The proper officer may cancel the registration of a person including any retrospective date in the following cases. Number 1, contravention of rule 21. If there is a contravention of rule 21, like number 1, conduct of business from a place which is not his place of business as declared. मतलब जो मेरा GST सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम जो सर्टिफिकेट में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिए थे उधर हम अपना कंडक्ट नहीं करके बिजनेस कहीं और पे कर रहे हैं. नंबर 2, इशू ऑफ इन्वॉइसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स. मतलब अगर हम जो इन्वॉइसेज इशू कर रहे हैं वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स है. नंबर 3, वायलेशन ऑफ सेक्शन 171, दैट इज अडॉप्शन ऑफ एंटी profiteering measures. Anti-profiteering measures like if there is a reduction in GST rate and the benefit of input tax credit is not passed on to the end customers, तो वहाँ पे वायलेशन हो जाता है एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स का. एंड नंबर 4 इज़ वायलेशन ऑफ रूल 10A. रूल 10A इज़ आफ्टर गेटिंग द GST सर्टिफिकेट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू अपडेट हिज बैंक अकाउंट विद इन 45 डेज. तो अगर वो वायलेशन होता है तो भी प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है from retrospective date. Number 2 is non-filing of return for 6 consecutive months or 3 consecutive tax period in case of a composition dealer. Number 3, non-commencement of business. मतलब in case अगर registered person has taken a voluntary registration and if the registered person has not commenced his business within 6 months from the date of registration, then the proper officer may cancel the GST certificate. Number 4 is registration obtained by fraud. If any registered person has taken the registration by fraud means then the proper officer may cancel the registration from retrospective date, provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard. Proper officer ऐसे cancel नहीं करेगा जब तक वो opportunity of being heard ना दे registered person को.
So as per rule 22, where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled, then he shall issue a notice in form GST REG 17. मतलब बोल रहा है कि अगर proper officer has reasons to believe कि the person is liable to be cancelled, then he will issue a notice in form GST REG 17. And after getting the so cause, the registered person has to reply in form GST REG 18. And after the reply of the registered person, if the taxpayer has not if the taxpayer fails to comply with the so cause notice, then the GST registration can be cancelled in the order form GST REG 19. And if the registered person has paid all his dues and along with interest and penalty, then the proper officer will issue the order in form GST REG 20. Now the last section is section number 30, revocation on cancellation. अगर कोई registered person वॉलेंटरी अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा था तो उसको वो रेवोकेशन करवा सकता है, मतलब वो रोक सकता है. हाउ? अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, so he may submit an application for revocation in form GST REG 21. तो रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर्म GST REG 21 फाइल करना होगा विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैंसिलेशन का जब ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर्म REG 21 फाइल करना होगा. Provided that the application for the revocation shall not be rejected unless the applicant has given an opportunity of being heard. मतलब मतलब opportunity of being heard ही वो proper officer उस application को cancel करेगा. He would first issue the so cause notice and seeking clarification within 7 days. अगर proper officer is satisfied, then there is a sufficient, and if there is a sufficient grounds for revocation, so he will रिवोक द कैंसिलेशन बाय एन ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 22. 21 हम लोग फाइल करेंगे एप्लीकेशन और 22 में अपने को ऑर्डर मिलेगा. Thank you for watching the video. If you have any queries, do comment in the comment section below, or just mail us in shajdadb@gmail.com. And you can also follow us on Instagram and Endurance Duo. Thank you.